Hello. I hope you all can hear me. आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं if you can hear me or not. आप लोग yes. Thank you. Thanks for the confirmation. बैंक निफ्टी कौन ले क्या रवि जी हम जरूर बताएंगे बैंक निफ्टी कौन लेना है कि नहीं. Santosh ji, we will take this up. Good afternoon. We can hear you. Thank you, Lakshman ji, for the confirmation. Thank you, Atul, Aditya ji. I can see काफी सारे पुराने नाम भी हैं, कुछ नए नाम भी हैं यहाँ पे. We will take all your queries up. I can see more people are joining in. Hi everyone. कितने लोग पहली बार आ रहे हैं? I hope काफी सारे लोग सुबह के सेशन में भी थे. We did share 2 intradays and दोनों profit में है as of now. जो अपडेट मुझे आया था, both the intraday are in profit, so that's a good news. I can see Arpit sir has also joined us. We will be starting. This is my second session. Hope Rajat ji, आपका पहला सेशन का एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो and you continue to join us daily for these sessions. Beginner for the first time, me first time. So good afternoon everyone. My name is Anuj Sharma. I am the community manager here at Motilal Oswal. I look after our community platform and every day you see me managing these sessions. हम हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस का यूज करेंगे so that's easy for you all to understand. जो हमारा मॉर्निंग सेशन होता है focuses more around the cash equity part and जो हमारा आफ्टरनून सेशन होता है that focuses more around the derivatives part. So जैसे कि आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी है तो आज हम फोकस करेंगे बैंक निफ्टी पे. कल निफ्टी है तो we'll have शिवांगी मैम जो ज्वाइन करेंगी. So don't forget to join in and ensure कि आपके फ्रेंड्स भी सेशन का पार्ट है. So let me bring in our Bank Nifty expert Arpit sir to the stage and then we can start the session. The focus will be around derivatives. That is something which is important. We need to understand. Stock queries का टाइम होगा तो हम लेंगे जैसा कि हम निफ्टी में stock queries नहीं ले पाए थे because हमारे पास टाइम नहीं था. But in BankX we took some stock queries, so that's how it's gonna be. Good afternoon, sir. We can see you clearly. Very good afternoon, guys. My voice is audible? Yes, sir. You are clearly audible. Yeah, just a second. I'll share the screen, and then we'll be good to go. Yeah, and you just confirm once the screen is visible, right? Yes, sir. Your screen is visible. Okay, perfect. So I'll just start in a couple of minutes. Yeah. Very good afternoon, guys. Welcome to Bank Nifty Expiry Play. And this week has been a roller coaster week so far. So Monday हमने one of the massive gap down opening देखी mainly because of the global turmoil. Yesterday again market opened gap up, but still Bank Nifty was under pressure. और हमने वापस later part of the day में selling देखी. कल फिर निफ्टी में हमने थोड़ा सा momentum मिला second half में. आज वापस similar structure था और हमने वापस gap up opening देखी. But आज थोड़ा सा setup change है. अगर हम देखें ऊपर से थोड़ी सी सेलिंग हुई पर नीचे की तरफ से वापस थोड़ी सी अब्सॉर्ब हुआ है. सो जो 2 दिन का सेलिंग प्रेशर था मार्केट में आज थोड़ा सा वो कूल ऑफ हुआ है. निफ्टी अपने गेन्स को सस्टेन कर रहा है हायर लेवल्स पे. सेम टाइम पे अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है बहुत टाइम से और हम क्लियरली देख रहे हैं कि आज भी मार्केट में बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग whereas broader market is outperforming. Selective sectors are doing very well. Morning we have recommended few trades also, उसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम है. So all in all market setup is mixed because of global weakness. India VIX हमने बहुत बड़ा spike देखा था. So now I'll come back to the expiry, focus on first Bank Nifty, then we'll move on to Nifty and then depending upon the BTST ideas and conviction delivery ideas की क्या हमें अच्छा लग रहा है. So first starting with Bank Nifty. So Bank Nifty का हम सबसे पहले डेली चार्ट देखें. सो बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे पिछले थोड़े दिनों से लो राइज लो रोज बना रहा है जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अपर बैंड पे अपसाइड पॉज है. बट अच्छी बात ये है नीचे के लेवल पे थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट भी है. सो अगर मैं चार्ट पे जाऊं और डेली स्केल देखूं सो एक ब्रॉडर रेंज है बैंक निफ्टी की 50,500 से लेके नीचे 49,750.
इमीडिएट रेंज, अगर आज मैं प्योरली आज के बारे में बात करूं, आज हमने ओपनिंग देखी गैप अप, फिर वापस हमने थोड़ा कूल ऑफ देखा और पिछले ऑलमोस्ट 3 घंटे से एक रेंज में फंस गया बैंक निफ्टी, जिसमें नीचे सपोर्ट है 49,900 नीचे की तरफ, ऊपर में 50,250। पिछले ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे से उसी में था। लास्ट 15-20 मिनट हमने थोड़ा 100 पॉइंट का मोमेंटम देखा, बट 50,000 के आजू बाजू ही बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। बैंक निफ्टी का अगर व्यूएप भी देखें हम तो 50,250 व्यूएप है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वो अपसाइड हर्डल है। सेम वाइज टेक्निकल लेवल्स भी देखें तो 50,250, 300, अगर आप लोगों को चार्ट विजिबल, राइट अनुज, द चार्ट इज विजिबल, राइट? Yes, sir, the chart is visible. सो अगर मैं चार्ट भी देखूं तो 50,300 एक बड़ा बैरियर है, उसके इमीडिएट बेसिस पे 50,200 और नीचे में 50,000, 49,900 एक सपोर्ट है। सो बैंक निफ्टी 250 से 250 पॉइंट की रेंज में प्ले आउट हो रहा है। मॉर्निंग में हमने मंदी के ट्रेड प्ले किए थे पुट के थ्रू, पोस्ट दैट एक कंसोलिडेटिव हो गया, सो वी आर वेटिंग फॉर द फ्रेश ट्रेड सेटअप। एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी का व्यू मिक्स है, so we are looking at the strikes. Immediate 49,900, 50,000 एक बैंक निफ्टी में सपोर्ट है, अपर वन में 50,200, and right now bank nifty is trading in between that zone itself, so we'll be wait and watch more. But in the meantime what we can do is we can take out few strikes, और हम strikes radar पे लगा लेते हैं। कॉल की तरफ हमें लगाना है 50,000 and 50,100 कॉल स्ट्राइक, एंड पुट की तरफ हमें निकालना है 50,100 पुट। सो 3 स्ट्राइक हम देख रहे हैं, कॉल में 50,000 and 51 कॉल, एंड पुट में 50,100 पुट। So this 3 strikes we are tracking and we are keeping on radar. सेटअप के थ्रू मोमेंटम रहेगा तो इधर हम प्ले करेंगे। एज ऑफ नाउ वी आर वेटिंग कि किस तरफ प्ले आउट करे, बिकॉज 2 दिन का ट्रेंड काफी पॉज नेगेटिव था। आज थोड़ा सा हमने रिलीफ रैली देखी है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि मोमेंटम बिल्डअप होता है कि नहीं होता है, और या तो हम स्ट्रेटेजी के थ्रू प्ले करेंगे। सो एज ऑफ नाउ वी हैव डिस्कस्ड द बैंक निफ्टी लेवल्स। 50,000 is the intraday support for Bank Nifty. Upper band 51 to 50,200, 250 is the supply zone. The strikes that we are keeping on radar is Bank Nifty 50,000 call and 50,100, and put is 50,100 put. So ये 3 strike हम radar पे देख रहे Bank Nifty में, and we'll update कि directional play करना है या strategy के through. Now I'll back to Nifty. So Nifty also has been quite choppy and quite volatile in last couple of sessions, but good part today. आफ्टर द गैप अप ओपनिंग इट ड्रिफ्टेड लोअर, बट वापस हमने थोड़ी नीचे से रिकवरी देखी, मेनली लेड बाय एफएमसीजी, फार्मा, सिलेक्टिव पीएसयू स्टॉक्स। सो निफ्टी इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग। स्टिल निफ्टी में बड़ा ट्रेंड अभी भी पॉज है। ऊपर में 24,400 एक मेजर हर्डल जोन है, नीचे में 24,150 इमीडिएट सपोर्ट है। सो निफ्टी भी बायस मिक्स है। ओवरऑल कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट स्टिल चॉपीनेस है। सो निफ्टी में लेवल्स में 24,150 एक सपोर्ट है, और अपर बैंड में 24,350, 400 सप्लाई जोन है। सो ये हुई बात निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। अगर हम स्टॉक्स के बारे में बात करें तो स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। ऑलरेडी हमने शेयर किया है बीटीएसटी आइडिया, Zomato. So Zomato has been one of our favorite pick, and from almost last couple of weeks we have been quite bullish on the counter. So Zomato का अगर हम मंथली स्ट्रक्चर भी देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग है। वीकली स्केल में मार्केट की वीकनेस के बाद भी वो अपनी गेन अराउंड 245, 250 लेवल्स। So from positional basis also slowly steadily we can expect good momentum towards 300 plus levels from a 1 month to 2 month perspective. Immediate basis पे 260 to 262 रेंज में बाय कर सकते हैं। 250 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 275 to 80 के टारगेट के लिए। So one is Zomato. Along with that, one more idea we have shared is Pidilite Industries. So Pidilite also the overall FMCG pack is quite good. And Pidilite का हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वीकली स्केल पे रिटेस्ट किया है ब्रेकआउट को, एंड अच्छी रिकवरी हमने नीचे के लेवल से देखी है। So Pidilite is right now quoting around 3,160 levels. So Pidilite would be a second BTST idea. 3,140, 3,150 की रेंज में बाय कर सकते हैं। 3,090 का स्टॉप लॉस रखे ऊपर 3,250 के टारगेट के। So 2 ideas we have shared so far, that is the Pidilite and Zomato. Zomato positionally काफी strong है, so we continue to hold that idea, and Pidilite would be a BTST idea. बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, so as हम डिस्कस कर ही रहे हैं, अब तक कोई मेजर क्रश नहीं है, कोई मेजर थ्रस्ट नहीं है मोमेंटम वाइज, so we'll update. In the meantime, Anuj, we can take few stock queries also, and then we'll update on the trade also. Sure, sir. So I guess we can start with the first query we have, persistent. Persistent. Yeah.
So if I see the chart from past 2 days, we have seen some selling pressure across the board, but today has been the recovery day. And if you see the chart structure of persistent, good retest of breakout on weekly scale around 4,500 levels. नीचे से हमने अच्छी recovery देखी. Slowly, steadily, we can head towards again 4,900, 5,000 plus levels. So chart setup बड़ा अच्छा है, strong है. ये मार्केट की वीकनेस की वजह से काफी चौकीनेस रही, जिसके वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखी हमने, बट सेटअप अच्छा है. 4,500 के स्टॉप लॉस से ऊपर 5,000 के लिए परसिस्टेंट वुड बी गुड टू बाय. The strikes on radar is Bank Nifty 50,000 call, 50,100 call and 50,100 put. If there is any confusion, you can check the pinned message. आपकी screen पर ही visible है. Sir, yes. Your view on the power sector? Yes. So if we see overall from the power space itself, we have seen tremendous momentum across all the power, mainly energy as a space, and power is also one of the sub-segment. So as a sector-wise, we are quite bullish on the space itself, whether it's Tata Power, whether it's JSW Energy, whether it's Torrent Power. So overall sector specific, we have been quite promising and quite strong sector-wise. Going forward also, I think from 2 to 3 months perspective, we can expect good momentum. And overall, by the power space, in spite of market weakness, it is holding at high levels. So power space, whether it's Torrent Power, Tata Power, JSW Energy, all are looking strong. And from 2 to 3 months perspective, definitely one can add at current levels and continue to hold. So Suzlon, like yes, one of the most asked stocks, Suzlon. Yes, absolutely. And I was just waiting. Definitely someone will be about to ask this stock. So if we see the chart setup wise, monthly structure is very strong. We have seen a very decent rally of almost 35% in last couple of weeks, from 50 odd levels to 70. So setup wise, the base of the stock is shift higher, and now immediate support is around 64 levels. So I think from keeping stop loss at 64, one can expect a rally towards 75, 80 levels. That is the setup wise that the stock suggests. In the meantime, I'll just like to revisit Anuj the Bank Nifty setup also. So if we can see some setup and some opportunity for our members to definitely, if we can make and play out some swing. I've just opened the chart of Bank Nifty also. So if you see clearly in last almost 4 hours, it is trading in that candle of the previous candle that has hit around 10:15 AM. And 200 पॉइंट की रेंज में है. अगर हम इंट्राडे चार्ट भी देखते हैं, so नीचे 50,000 49,900 सपोर्ट है, ऊपर में 50,150 हर्डल है. So we are waiting for the setup. Definitely, if we get any promising setup, whether it's through strategy or on naked directional also, will update. In the meantime, one more sector that I would like to discuss for the session is Nifty Pharma. If we see the chart setup, it is in strong uptrend, and we have been quite bullish on the space as a whole. Monthly, the structure is very strong. Weekly, it is holding at high levels. Daily, it is giving a fresh pole and flag breakout, which clearly indicates that all the pharma stocks are outperforming, and we can see the screen. In spite of market weakness in last couple of days, it is holding at high levels. So whether it's Cipla, whether it's Sun Pharma, whether it's Divi's, whether it's Oro, all are very strong. Lupin. So pharma from a 2 to 3 months perspective are looking very strong. So guys can definitely create a basket and can hold it for a couple of months. And now back to a few queries on which we can look out for, and then we can discuss about the trade. ICICI Prudential. Insurance, right? Yeah. So if we see the setup wise, insurance space has been quite outperforming the July series, but because of some market weakness, some pause was seen at higher levels. But monthly setup dekhe, so around 680, 700 एक major base बन गया stock का around 700. So I think with keeping stop loss 700, one can go long at current levels for 750, 760. Originally setup काफी strong है. Weekly में थोड़ा सा pause है, but the bigger trend is still positive. So the bias would be positive. Sir, your view on UPL? UPL. Yeah. So if we see the chart structure of UPL, overall being the space from the chemical fertilizers, the stock is in downtrend. Mainly if you look at the setup wise, there's multiple hurdles near 560, 570 zones. So I would definitely suggest कोई भी bounce आता है 565, 570 तक, would better to exit and move to better counters such as SRF or Deepak fertilizer. That would be better counters within the space. So जो भी bounce आता है 565, 570 तक का better है, हम exit करने की सलाह रहेगी.
Sir, HDFC Bank. Yeah. So once upon a time, this used to be darling for Bank Nifty. However, from past couple of years, almost 3 years, the stock has been in range. If we chart the weekly structure, the immediate structure is between 1590 to 1660. ये weekly है, पिछले 6 हफ्तों का चार्ट है. एक range bounds counter है, major momentum नहीं है. So if we see the setup wise, it is near its support zone of 1518, 1590 levels, but same time 1660 एक hurdle zone है. ये 40 पॉइंट के रेंज में है, कोई मेजर ट्रिगर नहीं है, ना मेजर चार्ट सेटअप इज दैट ग्रेट. हाँ, अगर 50 से 70 पॉइंट का रेंज प्ले करना है तो यू कैन डेफिनेटली प्ले विद कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ 1590 फॉर एन अपसाइड मूव टुवर्ड्स 1660. Sir, your view on IRIDA? IRIDA. Yeah, just before that, I'll come back to and I'll see some setup. If I look at the premiums for, as we were discussing, 50,100 put and 50,100 call also. Right now, also the premium is just eroding. And if we see, as we already discussing about Bank Nifty, कि 50,100 hurdle है और नीचे 49,900 support है. Now it is again back to its level of 50,000. And इस चीज का ही हम fear कर रहे थे because issue ये है, बड़ा ट्रेंड नेगेटिव है, but daily scale पे थोड़ा सा bounce है, जिसके वजह से ट्रेंड ओवरऑल मिक्स है. And if we see the swing also, there is no directional swing one way. But still, if we get any opportunity, and we'll try to play through some strategy if possible. So at least जिसमें probability high रहेगी, तो हम try करेंगे वो strategy को play करने के लिए. But still we are stuck in that range itself. नीचे में 49,900 और ऊपर में 50,100. थोड़ा सा हमने cool off भी देखा बैंक निफ्टी ऊपर से call में. At the same time put में थोड़ा सा spot हुआ है. And if we see selective stocks में भी थोड़ा सा pressure है, but broader market is outperforming and mid cap definitely we are seeing there is good momentum. Bank Nifty is still in range. We'll update if there is any trade setup or we'll play through any strategy. The last question, as Anuj you rightly asked about IRIDA, right? Correct. So if I see the chart structure, it is coming to its crucial support zone of 50 DEMA. अगर हम चार्ट देखो तो chart beautifully explains itself. जो भी एक trend follower करते हैं, आप देखोगे pink line, that is the 50 DEMA. It is holding to that level from past couple of months. So right now it's again back to that level. So immediate basis पे 235 is a major support. Closing about 248 will give momentum towards 260 to 70. So एक reversal play अगर करना है, so आप कर सकते हैं छोटे से stop loss रख के 235, 236 का, ऊपर में 250, 260 तक का move दिख सकता है. Sir, Mankind bought at 2064. Mankind bought at 2064. Invested 3 lakh rupees in this. 2064. So I think Mankind, if we see, it is still quoting near that price itself. If we look at the chart setup wise, I think the entry point is quite good enough because it has given retest of its breakout of almost 1900 and of a strong bullish candle. So I think at current junction continue to hold. आपको अगर add करना तो आप add भी कर सकते हो. And as pharma is the flavor for this season and good momentum seen across pharma stocks, so I think Mankind आप continue to hold. अगर और add करना तो आप add कर सकते हो. 1900 का stop loss रख के ऊपर 2300 और 2400 के target के. So Tata Motors. Tata Motors. So we have seen a very sharp rally in the last week, and now stock back to its previous breakout zone. So positionally the setup is very strong, but if we see the immediate basis, हमने थोड़ा कूल ऑफ देखा ऊपर के लेवल से 1100, हमने 1000 के वहां ब्रेकआउट देखा था, वहां से 1150 के वन वे रैली देखी है. नाउ बैक टू इट्स प्रीवियस सपोर्ट जोन. सो अगेन द रिस्क रोड इज क्वाइट फेवरेबल फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव. अगर इन्वेस्टमेंट आइडिया है तो कंटिन्यू टू ऐड इट, बट फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव विल वेट फॉर एनी मोमेंटम. 1050 के ऊपर क्लोजिंग आती है तभी नया ट्रेड सेटअप बनेगा. सेटअप वाइज 900, 950 एक मेजर सपोर्ट जोन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव. ट्रेडिंग के लिए हमारी वेट करने की सलाह रहेगी. And yes, guys, we are tracking Bank Nifty. We'll give a trade as soon as we see a good opportunity. Yes. Also, just one more update. The thing is, one more BTST trade. As we are seeing, the stocks is the flavor for the day, and Motilal is another BTST idea that we have given. And if you see the chart setup also, हम इसके पहले IRIDA के बारे में बात कर रहे थे जो 50 डेमो को होल्ड कर रहा था. Motilal भी पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने से 50 डेमो को होल्ड कर रहा है. एक अच्छी नीचे से रिकवरी देखी है. So BTST idea is Motilal. One can buy in the range of 4860, 4880 levels.
स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 4750 का, ऊपर में 50,500 50,050 5100 के लिए मस्टॉक वुड बी BTST आइडिया. जनरली ये थोड़ा स्टॉक हाई बीटा रहता है, बट सेटअप वाइज रिस्क रिवॉर्ड इज क्वाइट फेवरेबल. Coming back to the trade for Bank Nifty, guys, as we can clearly see from almost last 20 minutes, we're in the session for past 15-20 minutes, and Bank Nifty is just moving in that range from 50,000 to 5,100, and then from 5,100 back to 50,000. Also, we are looking at the call put also, but there has been no directional trade so far. That's why we are waiting. And guys, keep this thing in mind. It's very important. When the trade setup is not there, by doing some trade, it's not fruitful. But whenever there is some momentum, we definitely try to capture that and we play that swing. So अगर कोई momentum रहेगा या कोई strategy भी रहेगी तो हम update करेंगे. But अभी अगर आप जंक्शन देखें तो पिछले 3 घंटे से ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी रेंज में ही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, मेजर मोमेंटम किसी तरफ नहीं आ रहा. Also, one more setback is that in the VIX is cooling off. So जब VIX cool off होता है तो प्रीमियम क्रैश होते हैं as we head towards the expiry. So अगर आज भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट थोड़ा सा भी टिक आया है, बट उतना प्रीमियम में हमने स्पर्ट नहीं देखा है. Still, if there is any setup wise, we'll definitely update. So far you discussed couple of stock ideas: Zomato, Mazdog, and Pidilite. Mazdog from Zomato from a positional perspective for 300 plus levels. Stocks में जो sectors हम बात करें, pharma sector is very promising. The overall pharma basket looks very strong. So that is from the stock angle. Bank Nifty में we are still tracking. हम 50,100 का put and 50,000 का call भी हम track कर रहे हैं. अभी जोड़ी चल रही है 135-140 का राउंड, but still there is no major thrust. So we are just waiting कि अगर कोई मोमेंटम रहता है तो हम अपडेट करेंगे. In the meantime, also as you are seeing big gap up, gap down opening. So for index traders, we would advise try to stick to intraday trades. Avoid carrying positions overnight. Also, अगर carry करना है, so better to trade with spreads on the positive side, on the negative side. And as for the market wise, because walls higher है, हमने ब्रेकआउट देखा 13.5 14 के ऊपर वोलेटिलिटी में, और आज थोड़ी कूल ऑफ हुई है, बट स्टिल देयर इज लिटिल बिट ग्लोबल अनसर्टेनिटी. सो बड़े गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हम देख सकते हैं ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर में. या सो नाउ वी कैन कंटिन्यू टू कपल ऑफ स्टॉक क्वेरीज मोर एंड देन विल जस्ट अपडेट ऑन इट. आई कैन सी नितिन जी राइटिंग कि कुछ ही लोगों का व्यू देते हैं. अब नितिन जी आधे घंटे में तो पॉसिबल नहीं है कि हजारों लोगों की क्वेश्चन ले पाए, तो जितने हो पाते हैं वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम सारे क्वेश्चंस को ले पाए. एंड आल्सो वी ट्राई कि हम हर एक यूजर का एक ही क्वेश्चन ले. अगर आप देखें तो लोग 3-3 4-4 स्टॉक्स भी साथ में ही पूछते हैं, बट वी ट्राई कि हम एक तो ले ही पाए. सर कैन यू गिव योर व्यू ऑन केमिकल सेक्टर? Yeah, so if I see over the chemical space as a whole, so we have seen good rally in last couple of weeks itself in the chemical space itself, and within that selective stocks have done really well. So SRF, Deepak Fertilizers have done really well. So I think chemical space from here on also decent upside is possible, because पिछले 2 साल sector underperform किया है, mainly because of a lot of fundamental reason wise, and the price action was not supporting. So I think chemical space my preferred would be SRF and Deepak Fertilizer. These are preferred pick within the chemical space. And काफी underperformance हमने देखी है, so definitely I think from here on the setup wise we can expect good outperformance. And looking at this chart setup also, selective space such as Atul, Deepak Fertilizer looking quite promising, and risk reward is also quite favorable. So as a space it looks good, and stock specific action can continue. So pharma, FMCG and fertilizers, this 3 space overall looking quite good. Sir, your view on sale? View on sale? Yes. Okay. So metal as a space has been underperforming, and whenever we see there is some global turmoil, the metal is the first one to hit. And if you see the chart setup also in sale, it is holding next 200 DEMA. Chart structure is stuck in a range. 132 का support है, ऊपर में 150 का hurdle है. There is no major setup, no trading bet. Definitely the structure doesn't give any major signal. अगर 132 के नीचे closing आती है, then we can see some more pause. But so far it is stuck in a range and no major setup. Metal space would still avoid. We suggest to little bit avoid, because there is global uncertainty, and these are the first one to get hit.
Sir, Bank Nifty trade, do we have Yeah, any opportunity for today yeah. or So no trade wala din hoga? I think if we see the setup wise, the probability is very still low. But still, if I just look at the setup wise, Bank Nifty 50 100 put I'm still tracking. अभी चल रहा है 135 138 के around. And if I see if we expect some dip, if we expect some dip around 80 to 90 levels, अभी चल रहा है 130 के around, we can expect some momentum. But having said that, what we can do is otherwise we can play with one strategy, and that will be a low risk strategy. But still, if you just see the premium also, the premiums are just crashing. And definitely those who are consistent option buyers, they would be also understanding that it is get stuck in a range of 120 points. So we are trying to generate some trade, but if there is no opportunity, then I think we need to miss out on this. But still, if we get any trade set up, we still have another 4 to 5 minutes. We get any opportunity, we'll update on it. But so far, looking at the structure wise, nothing promising, nothing convincing. Because randomly, if we give the trade and it doesn't work, it doesn't make any sense, because we try, the probability should be high. And this has been the nature. जैसे 50,000 बैंक निफ्टी का एक ओआई डेटा भी सजेस्ट कर रहा है कि कॉल ओवर वहां पे मैक्सिमम राइटिंग है. सो आज काइंड ऑफ राइटर्स का डे रहा है सो फार, कि 50,000 के आजू बाजू ही बैंक निफ्टी घूम रहा है, ऊपर 100 पॉइंट मारा, फिर नीचे आया, फिर नीचे से वापस रिकवर हुआ. तो दिस हैज बीन द सेटअप. Anuj, so far no many major opportunity we are seeing on the bank nifty setup wise, looking at the setup wise. Having said that, we have seen good momentum in stocks. So guys, definitely we can look out for the stock opportunities that we have suggested and play out the same. Guys, please note, we have a less chance of getting a trade and we have already shared the BTST. Badhao buying at 4856, stop loss 4750, and the target is 5100. I guess जब तक sir analyze कर रहे हैं, we'll take 1-2 more stock queries, and if not, then we'll end the session. Sir, I guess we have a question around oil and gas sector and quick overview. Yes. In fact, if we see the the entire energy space is in beautifully set up. Whether it's the energy OMCs, whether it's the power stocks, whether it's the exploration companies. So as a sector wise, if we look at the overall energy and space, so it's ONGC, GAIL, NTPC, Oil India, BPCL. As a space energy, we are quite positive from a 2 to 3 months perspective. So like how we suggest for pharma also, within energy, a top pick within the OMC would be BPCL. That is one space. BPCL would be a top pick for 400 plus levels. Second would from the non-FNO space would be Oil India. ऑयल इंडिया हमने काफी टाइम रेकमेंड भी किया है, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे हमें 650-700 तक का मूव दिख सकता है. और पावर और स्पेस में से एनटीपीसी, गेल. सो ऑल दिस काउंटर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग and likely to outperform in coming months. That's the nature of the market. जो मार्केट गिरने में कम गिरता है और जब मार्केट रिकवर होता है, so these are the sectors that are likely to outperform. So energy as a space, pharma as a space, FMCG as a space are looking very strong. So guys, try to make the most of it from the sector specific. So far looking at the bank nifty, as Anuj mentioned about the any trade setup, but I think it's got stuck in a range of 150 points. And the risk reward is not favorable, because if there's no momentum, the premium would decay, and we don't want to unnecessarily just take the chance looking at without the setup. So I think from a bank nifty trade, I think there's no major trade. Stocks idea we have shared, and looking forward to you, Anuj. Anuj, you're on mute. Sorry. I was saying we'll take 2 to 3 more queries. Next is Orient Green. Orient Green. Yeah. Orient Green. 23 is the rate, right? Yeah. Okay, so it's the stock is already in upper circuit, and I think if we see technically purely, it is coming out of a range after almost 20 weeks. So upside we can see a move towards 28 levels. Setup wise it's strong. हमें upside move दिख सकता है 26, 28 तक का. नीचे support हो जाएगा 22 का 21. So the last would be Exicom. Which stock? EXICOM. Exicom. Yeah. So I think this has a relatively shorter time frame because it got recently listed in the month of April.
If you see the chart setup wise, it is in downtrend. अच्छी रैली हमने देखी, 520 तक वहां से करेक्शन देखा. So I think good buying zone would be around 350 levels. 350 एक मेजर सपोर्ट जोन रहेगा. एज ऑफ नाउ कोई रिवर्सल नहीं है. 350 360 के जोन में आता तभी फ्रेश ऐड कर सकते हैं. 340 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 400 420 के टारगेट थे. And just to add one more thing, Anuj, if I just see the call and put for the Bank Nifty, it's almost getting decay, the out of strikes, and Bank Nifty is back to square to 50,000 levels that we were tracking. So kind of there was a choppiness within that range itself. That's why we refrain to give any new trade or any directional trade for Bank Nifty, but we have shared the BTST ideas. Also guys, volatility is there, so stay light on overnight. Stocks में अच्छा momentum है, index में एक choppiness है, but stocks में एक अच्छा momentum to play the momentum through stocks. So yeah, that's all from our side. I can see some messages कि हर बार ऐसी ही बात करके चले जाते हैं, ट्रेड नहीं देते हैं. Guys, we need to understand कि हर बार ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं होता है स्टॉक मार्केट. एंड रही बात कि हर बार बात करके चले जाते हैं. Our last Nifty expiry was profitable, BankX was profitable, Sensex was profitable, Nifty was profitable, and उससे पहले हमारा last Bank Nifty was no profit, no loss. Then Nifty was profitable, no trade in the last BankX. So this has been the last journey of last 1 week. So it's not that कि ऐसा ही होता है, but thanks for Santosh ji. This is a very bad allegation. MO team is doing an excellent job. We are trying our best कि हम ये knowledge session को मतलब इस trading session को knowledge session में भी convert कर पाए, you know, giving relevant information and stuff. But we need your support. And it's better to save capital. And हर बार कहते हैं कि taking no trade is also a trade. अगर हम आज कोई trade दे देते, जैसा सर ने बताया कि profit तो होता नहीं, डीके हो जाता. Right? We need to understand that. So that will be all. Thanks a lot, Arpit sir, for joining in. हमारे आज सुबह के 2 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहे. हमने अभी एक BTST शेयर किया है. We hope कि वो भी प्रॉफिट में ही जाए. And that will be all. Thank you everyone. Thank you guys.